Hello students, welcome to BYJU'S exam prep, most comprehensive app for all competitive exams. Now today we have one important session on what? Scribble Pad, right? Why this session is important and how we can use Scribble Pad efficiently during your competitive exams, that is what GATE 2022. So first of all, inform me that sound quality, picture quality, everything is fine. Everyone please inform me that sound quality, picture quality, everything is fine. Yes, please. And if everything is okay, then like, subscribe and share the link of this session in your group. Okay, right, guys. Okay, very good evening, everyone. Very good evening, Bhavesh, Live, Bhattacharya. How are you? Call of duty and so on. Now, some students think that what is the use of a Scribble Pad and what virtual calculator. We have idea about all these things and so on, right? Always remember one thing, guys. These small things will make big difference. Yes or no? Okay. तो कैसे यूज करना है? How we can use efficiently the Scribble Pad, virtual calculator, rough pages, pen, copy, calculator. Each and everything is important to crack exam like GATE. Okay. So this is a very good evening, everyone. Very good evening. Right. Always remember one thing, that this is not a small thing. Best way to use what? A Scribble Pad in GATE exam. Just I am going to experience my my experience with you, as well as experience of number of students, experience from toppers, how we can use this Scribble Pad during exam with what? Virtual calculator. Okay, right. तो एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ना, आपको भी मालूम है, आपने भी सुना होगा, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था. यस और नो? बड़ी बड़ी जहाज ना किनारे में आकर फंस जाती है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज माय इंट्रोडक्शन. माई सेल्फ संजय राठी. आई एम हैविंग अराउंड 20+ years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU. Okay, and I have qualified and selected for engineering services exam. These are my ranks. In ESE 2005, AIR 21, and that is what? In ESE 2008, that is 21, and ESE 2005, that is what? 16. And I have mentored more than 1 lakh students for these competitive exams. These are my subjects: network, digital, control, EDC, analog, advanced electronics. तो भाई अब आ गए सभी? Okay then. Now, very good evening, everyone. What thing will be provided in hall? Sir, what thing will be provided in... Siva Kumar, I am going to explain each and everything, right? And what about the Scribble Pad? How many pages and how we can use this? Each and everything we will be discussing in this session. And then you can ask me anything about this, okay? Yes. Now, one very important information for you, right? Just after GATE exam, that is what? GATE 2022. On 5th Feb and what? 6th Feb. For electrical and computer science, that is on 5th, then 6th, then for mechanical and civil on next week, we have complete exam analysis, right? So subscribe now from 12:30 p.m. and then what? 6 p.m. For morning session it is from 12:30 p.m. and for evening session it is from what? 6 p.m. on same channel. Okay, to please subscribe the channel on 5th, 6th, 12th and 13th. Just after exam, just after GATE exam, you will get the answer for and all the number of questions. Okay, so that is for you. And one important session is waiting for you, right? That is what? Don't enter exam hall without revising these 25 most expected topics. 25 most expected topics by your favorite Rakesh sir and Chandan sir. तो ये भी है just after this session. तो please subscribe the channel, right, so that you will get the notification about this session. Okay, तो आपको आना है और ज्वाइन करना है this session. This is very very important one, because last year already we have provided what? Number of important topics and number of questions from those topics. So just before exam we will share our experience, right? And we will provide you some important topics from all the subjects, right? So these are the 25 most expected topics. So detailed discussion, you can ask your question just after this session. Okay. Now
Now, please, what is a Scribble Pad? Just in exam hall, you are going to get what? Rough pages. That is simply known as what? A Scribble Pad in what? Or GATE exam, GATE, right? So that is the name, but it is actually we are giving what? Rough sheets. So we required number of rough sheets because GATE exam is mainly based on what? Mathematical calculations and so on. We have to use what? Virtual calculator, rough pages. Sometimes we are getting the very tricky calculation, or sometimes we are getting what? Very lengthy calculation in a GATE exam. Okay, that is just not like that what AE exam or JE exam or what. Sometimes in engineering services pre-exam, virtual calculator is not allowed, and we are getting the hard paper, right? Hard copy of question paper. But here you are going to get what? Soft copy of question paper, and that's why this is very, very important one. So what will be the size of that? So normally that size is what? 8 cross 6 inch. That is the size, right? Just I will show you. This is the size of the Scribble Pad, right? Watch this one. This is the size of this. So this is the case. Rough new students. Some students are very new for that. For those students, that is the size, right? This is what 8 inch, and that is what 6 inch. So some students may put like this. Okay, it is visible to you, everyone. So this is a Scribble Pad. Okay, we have rough sheets. So how many number of rough sheets? It is around 12 pages. Okay, and if we are talking about the two sides, then it will be what? 12 into 2. That is what we have 24 sides. Okay, pages side. That is the 24. Total 12 pages. 12 into 2. That is what? 24 sides. Now, sometimes they will provide you what? Extra what? Scribble Pad. But you have to ask them. So before exam, please ask them whether they are going to provide you the extra pad. Then what is the condition? Sometimes they may ask to submit your what? Old that Scribble Pad. Okay, before giving what? New one. So that will become difficult for you. Okay, and sometimes they have no idea whether it is we have to provide, or they may simply refuse it. Okay, so please ready for worst condition. So simply we are getting what? One Scribble Pad. We are having around, normally sometimes it is what? 12 to 18 pages, but roughly it is what? 12 pages approximately. 12 pages, two sides means what? 24 page sides, right? It is possible, but always remember it depends upon your center. So ask them before starting your exam. Okay, is it clear, my dear students? This point is clear to you? तो हर सेंटर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है. वो आपको बोलेंगे यस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. मेरे साथ भी ऐसा ही केस हुआ था. मैं अपने एग्जाम हॉल में 15 मिनट्स लेट हुआ था, लेकिन उनको आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मुझे एंटर करवा दिया. अगर यही चीज आपकी दिल्ली में हो जाए और आप 15 मिनट्स लेट है ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल वो आपको बाहर कर देंगे. ये भी बात ध्यान रखिए कि एग्जाम हॉल में आपको हाफ एन आवर बिफोर पहुंचना है. जो भी आपका टाइम आपने सेट किया है बिफोर जाइए. और अगर आपको लगता है कि एग्जाम हॉल आपके पास है और उस आप सिटी में हैं, तो एक दिन पहले जाकर आप अपना एग्जाम सेंटर भी जरूर देख लीजिए. ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है. दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, अब अगर मान लीजिए मैं 15 मिनट्स लेट गया और मुझे एग्जाम देने नहीं मिलता, तो मैं आपके सामने नहीं आता, राइट? 16th रैंक मेरी कैसे आती? और शायद मैं 15 मिनट्स बिफोर हो जाता, तो क्या पता मेरी रैंक क्या होती. तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एंड दैट्स व्हाई. तो जैसे ही एग्जाम सेंटर में एंटर करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए क्या आप एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड देने वाले हैं, और अगर देंगे तो क्या आपको जो हमने यूज कर लिया उसे क्या आप जमा करवाएंगे. तो क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, दे आस्क टू सबमिट व्हाट? ओल्ड स्क्रिबल पैड. ओके, नाउ so that is the number of pages. Now what is the size? That is the way. So please watch this one very carefully. Watch this one. This is a scribble pad. Okay, then now these all are what? Blank pages. No doubt I am having what we have some line, but they will provide you what? Blank pages. Both the sided will be blank to you. Okay, that will be the size 8 cross what? 6. That is the size. Now number of students have the habit to use the scribble pad like this. Like this is the first page. They will write number 1 page, then first page, second page, third page, fourth one, fifth one, then sixth, and so on. 7, then 8, and what? 9. So total what? 24 pages, right?
This is called portraits style, and the best way to use what Scribble Pad from the number of students, they already shared the experience that if we are using on landscape orientation, means what, like this. If suppose we are using like this, right, okay, then you can save your time, because time management is very, very important. Okay, so like this we can use, this is the page. Two ways to use this, one way or second way. So in this case we have to divide the page. Just I will give the idea how we can divide the page, or we can use like this, right? We have limited number of pages, that's why we have to use this efficiently. So if you want to use that landscape, then it is more comfortable. Second thing, start writing like this. Some student will write first of all here, then second here, then third here, then fourth, and so on. But that again from the experience, if you want to use like this first page, then you can use it as a second page, then third page, then fourth page. This is the last one, this is the last page, then simply reverse the copy, and again you can use first, second, third, fourth, and what, fifth. So you can give the numbering it to, that is 1, 2, 3, and up to what, 12. Last page will become the 12, and then what, again you can start from 13, 14, 15, 16, 17, and last page will become what, 24. So why just easy method. Okay, so we can effectively use this copy. अगर आप देखेंगे ना अपने नेचुरल टेंडेंसी, तो हमारी ऐसे ही है, हम लोग यूज करते हैं ना, वी आर कंफर्टेबल with this type. When we are writing, when we want to maintain some speed, then we are comfortable with this page. Normally the students are not comfortable with what, this side. So we can make so it's up to you, it depends upon your practice. You have any question on this? You have any questions on this? Right. Will health checkup be done, sir? No, they will not ask for that. Definitely they will provide some guidelines before GATE exam, don't worry. Definitely they are going to give some guidelines. Okay. Yes, according to rule, the old rough is to be submitted. Yes, Rahul. In some center they may ask, please submit your old rough pages. Then they will provide you what, new one. But what about the purpose? Why we are solving the questions? Then finally we will review all the questions. Right? वापस आना है, सभी क्वेश्चंस को वापस चेक करना है. तो जब अगर आपने ओल्ड को जमा कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी पेनफुल हो जाएगा. ओके, राइट. तो देखिए, जिनका भी अभी तो कई स्टूडेंट्स का इसके बारे में दैट दे विल प्रोवाइड यू द गाइडलाइंस. डोंट वरी, इफ वी हैव सम इंफॉर्मेशन देन डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू. ओके, RA Black, definitely IIT will provide all the notification about what vaccine certification or what guidelines. Right? Don't worry. Okay then. If you have the that copy of certificate, then please keep a copy of that, your vaccine certification. Okay. यार स्क्रिबल पैड नहीं देते, वो रफ पेज देते हैं. तो यस, इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू, नॉर्मली दे विल प्रोवाइड यू व्हाट, स्क्रिबल पैड. इफ सपोज दे आर प्रोवाइडिंग यू द रफ पेज, देन यू कैन सिंपली टेक व्हाट, one A4 size paper and fold it and cut it in 2 pieces. Then it will become what, just like a scribble pad. That size will remain same. Okay. We can take one of pens, or will they provide? Right here, yeah, that is the Kusagra Kesav. You can please bring a pen, right? One pen or 2 pen, or what, pencil, eraser, and what, sharpener. Right? So it should be in your toolkit. Right? No doubt they will provide you one pencil, one eraser, and one what, sharpener. Right? But please, दोनों साइड से आप शार्प करके पेंसिल ले जाइए, पेन ले जाइए. कैलकुलेटर तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर है वहां. राइट? पेन आप जिसमें स्मूथ है उसके 2 पेन लेकर जाइए. वो जो प्रोवाइड करेंगे वो एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा ही. डोंट वरी अबाउट दैट. यार वर्स्ट कंडीशन के लिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर व्हाट, वर्स्ट कंडीशन. राइट? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ है. Okay then, next thing,
कोई भी ऐसी गलती मत करना, सब कुछ अपनी तैयारी के साथ जाइए। तो ये हो गया पहला। सेकंड पेज, दैट इज द बेस्ट वे, you can use in what landscape orientation or you can use in what portrait orientation, but that is according to experience, that is more comfortable. Okay, from first to last, then last to first. Okay, so that is the way. Second way, numbering each solution with what question number. Suppose we want to give the answer, we want to solve question number 1, then proper numbering should be there, and that is what, that question number 1. Suppose I am writing what question number 1, watch this one, right? I am writing the question number 1. Now I am writing the solution here, right? There are two ways to write the solution. One way simply in haphazard way, that is the page. I am writing the solution like this, like I want to solve on some numericals, that is the 2 plus 2 is equal to what, 4 is multiplied 3, it is given what, 12. Now the 12 divided by 6, that is give you the 2. Now the 2 is the answer. Okay. For very simple calculation, some students use like this, very in random fashion, right? That is what 2 plus 2, that is what 4. 4 into 3, that is what 12. 12 by 6, that is equal to 2. And final the answer is what, 2. Okay. No doubt we are getting the answer. But my dear friends, we have limited pages. Always remember. Then what should be the style? That is the page. Watch this one. That is the question number 1. Write 1 here. Question number 1. Systematically you have to write question number 1. Then solve like this. 2 into 2, that is equal to 4. Then 4 into 3, that is equal to 12. 12 divided by 6, you are getting the answer 2. Now question is over. Please make proper boundary here. Now you can start question number 2 from this, or you can start question number 2 from this. Then start solving here. 3 divided by 3, that is equal to 1, and so on. Go like this. Again, that is the question number 2. Continue. Question number 2 over here, you can make a boundary. Now the question number 3, you can start from this point. That is one way. That is what, one way to write the answer. Is it clear? So that is a systematic way. That is not the systematic way. In random fashion, we have limited number of pages. This is simply the wastage of pages. It will waste your time, right? So that is the one way. So that is simply make a proper blocks. That is the solution. Now, suppose I am writing the question number 1. I am wasting my time. Why you are writing the question number 1? You can directly write what 1. Then directly write what 2. Directly write 3, and so on. In this way we can save our time, because this Q is what, again redundant. Q is what, again redundant. Is it clear? Now already I have mentioned that the total how many pages, minimum 12 pages. Supriya, minimum 12 pages they will provide you. Okay, okay then. तो एक बार ज़रा आप लोग ज़रा लाइक भी कर लीजिएगा और एक बार अपने सेशन को शेयर कर लीजिए. देखिए जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक द सेशन, ओके, एंड गिव योर अटेंडेंस. आप पेन आपको लेकर जाना है खुद की, दे विल राइट, ये आप ध्यान रखिएगा. सर ये सॉल्यूशन तो अरे रीचेकिंग दैट ड्यूरिंग रिव्यूज, राइट? When we are for second attempt, that is important. This sequence number, sequencing is very, very important. Suppose I want to attempt the first question, then what second question, then what third question, then what fourth question, in a very systematic way, right? Otherwise it is going to create what problem for you. Always remember this thing. Now numbering each solution with question number. This is very, 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 very important point. Start with this, right? But again it depends on you. If you want to use like this, for example, that is the page. If you want to use like this, no problem. You can divide it like 2 ways. This is the question number 1, question number 2, question number 3, and so on. Okay, or you can just divide like this, question number 1, question number 2, like this. Or
on landscape, that is the question number 1, question number 2, and what question number 3. After solving question number 1, you can make boundary, because for some questions the calculation may be lengthy, or for some questions calculation may be very short. No need to make boundary initially before exam. No need to make the boundary before exam. Just after starting the solution, simply write question number 1, solve it, and then after solution make a proper boundary. Because sometimes it may require more space, second question require less space, third question may require large space, and in one page is also we can give the answer for what, fourth question. It may possible. Okay, this is clear to you. क्या क्या ले जाना है एग्जाम हॉल में? एडमिट कार्ड ले जाना है मेरे बच्चों। पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड ले जाना है, पेन ले जाना है, पानी की बोतल ले जाना है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेकर जाइएगा, लाइक दिस इज द ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ओके, और एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना है, आपको कोई रफ पेजेस नहीं लेकर जाने हैं, या याद रखिएगा। और बिफोर एग्जाम में हाफ एन आवर पहले जाइएगा, और अगर पॉसिबल है तो एक दिन पहले जाकर देख कर आ जाइए सेंटर। इफ इट इज पॉसिबल तो जाइए और एक दिन पहले देख कर आइए। कोई भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेट नहीं होना है, ये बात का ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? पूरी चीज एक दिन पहले बिफोर चेक कर लीजिए। सेंटर अगर आपका दूर है तो आप पहले एक दिन पहले पहुंच जाइए, वहां पूरी व्यवस्था कर लीजिए। आपको याद रखना है वो जो दिन है वो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एक भी छोटी सी भी मिस्टेक पूरे एग्जाम को गड़बड़ कर देगी। अब देखते हैं जरा, ये तो मैंने आपको बताया ही साथ में। सेकेंड थिंग, राइट सिस्टमैटिकली। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से लिखिए, बहुत ही जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं प्लीज राइट इट स्टेप बाय स्टेप एंड सो ऑन, एंड नो नीड टू राइट लाइक दिस। गिवन इन द गिवन क्वेश्चन दैट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू व्हाट 1 हेनरी, R is given as what 1 kilo ohm, and so on. Now you will write the formula. Just I am giving you the formula, that is the C is equal to or something, capacitance is equal to, or we are writing the Vj is equal to Qn by 2 epsilon W square, and then we are putting the values for that, 1.6 into 10 raised to power minus 19 and so on. So my dear students, if suppose we are writing each and everything on that, just we are simply wasting the page, Scribble Pad, because we have limited pages. Second thing, just we are wasting our time. Okay, so if you have the direct formula, then after the formula simply go for what, virtual calculator, and put the values of all the constant, put the values of all the parameters. No doubt you can write the parameters, values of the parameters. Okay, and then use these parameters systematically and get the answer in your virtual calculator and put the answer. Very simple. Okay, that is the way. We are writing, just we are wasting our time. So that is the way. And now what about the font size? Watch by font size. In one side I am not able to solve single questions. So for some students the font size is what very right, it depends upon what, handwriting style. Yes or no? It depends upon handwriting style. For some students one page is not sufficient to solve single question, and for some students they are able to solve what, 5 to 6 questions in what, single page. That depends upon your handwriting style. But my dear friends, if you have that type of handwriting style that we are not able to solve single question on what, single page, then you have to practice. Then you have to what, practice. और जो ऐसा लिख रहे हैं ना, एक ही पेज में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ली, कैसे हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? यस प्लीज गिव मी द आंसर। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो एक ही पेज में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? 5 क्वेश्चंस इन वन पेज। यार कई लोगों की राइटिंग ही देखो ना इतनी है कि आप खुद भी समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। राइट, दैट इज इक्वल टू डी, और इतना स्मॉल लिखेंगे कि पूछे में समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन इट डजंट मैटर यार, दूसरों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे क्या करना है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको आनी चाहिए। आपके लिए रफ पेज, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, नो वन इज गोइंग टू चेक योर रफ पेजेस, नो वन इज गोइंग टू चेक योर रफ पेजेस, राइट? इट इज जस्ट फॉर यू, so you can write in your own ways, but remember that if you are not able to read again, then what is the use of this? भाई बाद में रिव्यू भी तो करना है, पेपर में वापस भी आना है और आंसर को चेक भी करना है।
तो इस तरीके से लिखिए कि जिसको आप खुद रीड कर सको, राइट। हाँ, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, समटाइम्स इट विल टेक मोर स्पेस, बट राइटिंग, हैंड राइटिंग स्टाइल, बहुत कई लोगों की बहुत बड़ी फॉन्ट साइज होती है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और कई उसको छोटा करेंगे तो खुद ही नहीं समझ पाएंगे कहां से स्टार्ट किए थे। इसीलिए एक चीज और मैं आप लोगों को प्रिकॉशन लास्ट में बताता हूं, पॉइंट्स वो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, राइट। उसके बाद में पूरा write the answer very systematically so that we can review all the questions, right? In second attempt, neat and clean. Sometimes, for example, in question number 2, we are just giving the formula here. Let the C is equal to Qn by 2 epsilon W square, or Vt is equal to Kt by Q. We have the formula, we are just writing the formula, but we are not getting the answer. At that time, we are not getting the answer. We are not getting the way how to solve that particular question. Leave it. Just leave it. Go for what next question. It may be third question. It may be what fourth question, or it may be what sixth question. Write number what in sequence manner. Suppose you are able to solve first question, write question number 1. Able to solve second question, write question number 2. If you are not able to solve the third question, then you can write the question number 4 here, but in a sequence manner, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. That should be in what sequence? Okay. Then third thing, if we are just giving the partial answer, now in second attempt again we will try to solve that particular questions. Again we try to solve that particular question. In that time, if it is not possible to search where we are writing the second answer, we are not getting the where is the second answer, just we are searching here and there, but we are not able to that particular question, then it will become very, very difficult for you. Definitely it is going to waste your time. Okay, again you will take a fresh page and again you will start solving the question number 2. Again you will write the same formula, again you will write the same data, then you will solve the question. Definitely it is going to waste your time. Always remember this thing, and that's why this is very, very important. Write number in sequence manner. Okay, sir, they gave one legal seat and they another after written first one. Very difficult. They don't give the scribble pad in. Yes, that is the problem. They will ask you to submit your old scribble pad, and that is the problem, and that's why we are taking this session. That's why we are taking this session. What is the size of the each seat? 8 cross 6 approximately, Rahul. Kusagra Kesav. 8 cross 6, 8 inch cross 6 inch. Right? That is the size. This is the 8 and that is what 6. Approximately that is the size. Okay. तो A4 के कॉपी को पन्ने को फोल्ड कीजिए, उसको ब्रेक कर लीजिए, एंड देन यू कैन मेक और यू कैन परचेस इट फ्रॉम द मार्केट. दैट इज द साइज. यार इजीली अवेलेबल है, ये देखिए आपको दिख रही है आपको. दिस इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट. Then or remember that all the pages should be what blank. There should be no lining on that pages. Okay. Sir, how to recognize wo to that will be available on what your system, that how recognize that how many answer you have given and how many questions attempted by you, right? 1 marks question, whether it is a MCQ or what MSQ or numerical answer type, each will be mentioned there. Okay. Is there is any dress code like okay, abhi tak to Divya we have no idea about that. Is there is any dress code and so on, right? If definitely if there is some information about that, then we will take one session on that. Okay, we will inform you on Telegram channel, and we will make one 1 minute short video for that. Don't worry. Pen card, it doesn't matter. The color may be black or may be what blue. Normally we are using the black color or what blue color. Yes, you can carry the pencil, sharpener, eraser. Okay, or sometimes they may provide, in some centers they may provide what पेंसिल, शार्पनर एंड व्हाट इरेजर. पेंसिल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चॉइस है, बिकॉज वी कैन इरेज आवर मिस्टेक्स. यस, देन यू कैन यूज द पेंसिल और शार्पनर और व्हाट, प्लीज शार्प द पेंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स. ओके, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, यूज सुटेबल फॉन्ट साइज. राइट, जैसे आपकी प्रैक्टिस है, रातों रात तो कोई बदल नहीं सकता, आप सालों से लिख रहे हैं, लेकिन फॉर नेक्स्ट 5 days यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके, प्लीज use this scribble pad efficiently. Work on your handwriting style. Reduce your font size so that we can solve minimum 2 question in what 1 page.
minimum 2 question in 1 page. This is very, very important one. Then don't use Scribble Pad for theoretical and conceptual questions. Some students, right? Here I am not getting the concept, because this time we are going to get what, some MSQ, multiple select questions. Yes or no? So MSQ normal, what will be in MSQ? One, for example, we are getting the 4 options, A, B, C, D, 4 options. It may possible that first option is based on what, numerical. Second option again based on numerical. Third option may based on what, theory. Fourth option may based on what, important concept. So some students are writing the concept on what, that pages. For example, emitter follower is analogous to voltage follower. It is right or wrong? I'm not, please, to recall that concept, we are simply writing on what, this Scribble Pad. How many students have this type of habit? How many students have this type of habit? Right? मुझे भी है, बिना लिखे मुझे भी समझ नहीं आएगा, मतलब मैं जब लिखूंगा तब मुझे याद आएगा हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था. Yes or no? How many students have this type of habit? Right, MSQ and that don't have negative. No. In MSQ there is no negative marking. Don't worry about that. Right, sir, can we get same Scribble Pad which you showed? Is it possible for? No. They will provide you the Scribble Pad. They will provide you the Scribble Pad. You can't take the Scribble Pad to what, exam hall. Okay. Right. Array MSQ, there is no negative marking in MSQ. No negative marking in MSQ. Okay. So please, this point is very, very important. Don't use the Scribble Pad for theoretical and what, conceptual questions. No need to write a statement like this. Right? No need to write. Just simply we are wasting what, that we are wasting our time, wasting our resources also. Okay. Always remember this thing. In numerical answer question, there is no negative marking. In MSQ, there is no negative marking. In MCQ, multiple choice question, there is what, negative marking. Already have taken one session, how we can attempt MCQ efficiently without knowing the answer. Elimination method, calculated risk, is each and everything about MCQs. Okay. Yes, there is no partial marking in what, MSQ. There is no partial marking in MSQ. Just I am going to give the answer for this question. Just I will cover that. Okay, next one. Now, my dear friend, this is very, very important point. For electronics student, we have around 5 days. 1, 1st Feb, 2nd, 3rd, 4th and 5th. On 6th, they have exam. Right? This is for electronics student. Means we have 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5 days. For electrical and computer science, that is the date. For mechanical student, on next week means what, 12th and 13th Feb, we have exam. Okay. So for mechanical and civil branch, my dear students, if you want to do some rough, so from 1st Feb onwards, use only what, Scribble Pad of proper size, only. Everyone, whether it is electronics, electrical, computer science, mechanical, civil or other branches, for rough work use only what, Scribble Pad, just for your practice. पता चला प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको मैं अर्जुन का गांडीव भी दे दूं, याद है ना उनके अर्थ का नाम क्या है, वो भी दे दूं ना तो भी उसको एग्जाम में चला नहीं पाओगे. अरे आपको मैं बंदूक भी दे दूं, गन भी दे दूं, राइट, उसके बाद अगर आपको चलाना नहीं आता तो वी कांट यूज इट व्हाट एफिशिएंटली, और चलाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसीलिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम प्लीज प्रैक्टिस, राइट, to how to write in what, Scribble Pad. Do your all rough work on what, only on Scribble Pad, right. This is very very important. अगर आपके पास मार्केट पास में है तो प्लीज परचेज दिस, जितनी भी है आपको 10 और 20 कॉपीज ऑफ दैट. दिस इज वेरी वेरी चीप, अराउंड 10 रुपीज और 10 to 15 रुपीज per piece. Okay, only 10 to 15 rupees per piece. Second very very important thing is what, that if you have it is not available to you, तो क्या करना है,
A4 साइज का पेज लीजिए, उसके 2 पीसेस कीजिए और उससे आप बना लीजिए, टोटल होने चाहिए व्हाट इन 12 पेजेस इन व्हाट 1 स्क्रिबल पैड। तो आप वो बना सकते हैं। सेकंड प्रैक्टिस वो है, A4 साइज पेपर है, ब्लैंक साइड है और उसका यूज कीजिए, राइट। और आज से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा ना हो डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन व्हाट स्क्रिबल पैड इन व्हाट मेन गेट एग्जाम। सपोज सम स्टूडेंट्स आर एवरीथिंग इज वेरी इजी यार ड्यूरिंग एग्जाम, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हाईली कैजुअल फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट। उनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे दो ना, वो मानते नहीं है। उनको क्या लगता है पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है पता नहीं, क्या कर रहे हैं ये सब, क्या मतलब कुछ भी बातें छोटी छोटी बात कर रहे हैं। राकेश सर आए वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में बता रहे हैं, क्या हम इंजीनियर नहीं है क्या? कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। अभी एक का कमेंट्स था, मैंने कहा स्क्रिबल पैड पे एक सेशन लेना है। यार ये भी अगर इंजीनियर को बताना पड़ेगा, क्यों नहीं बताना पड़ेगा, व्हाई नॉट, राइट। तो हमारे बीच में राकेश सर भी आ चुके हैं और देखिए वार्म वेलकम कीजिए जरा, पूरे हार्ट आप पूरा लगा दीजिए, हर अलग अलग कलर के लगा दीजिए और पूरा अच्छे से स्वागत कीजिए उनका, राइट। और एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है बाय राकेश सर एंड व्हाट चंदन सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ओके। तो लास्ट ईयर के जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उस आउट ऑफ दैट 25 टॉपिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नो डाउट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। पूरे साल भर हमने गेट एग्जाम की तैयारी की है, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स तैयार किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको आप और अच्छे से देखकर जाइएगा, ओके देन। इसके बाद जस्ट होने वाला है सेशन नाउ, राइट। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो ये आपको प्रैक्टिस जो है ना बिफोर एग्जाम करनी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन जाके एग्जाम हॉल में कर रहे हैं, फिर इस साल करोगे, फिर अगले साल करोगे, फिर तीसरे साल करोगे, फिर चौथे साल करोगे। ऐसा किस किस का प्लान है? 5 years प्लान, दैट इज कॉल्ड व्हाट पंचवर्षीय योजना। कई बच्चे ऐसे हैं ना, वो एग्जाम में गलती करते हैं, उसके बाद अगले साल सुधारते हैं, फिर एग्जाम में गलती और फिर अगले साल सुधारते हैं, क्योंकि गेट एग्जाम एक ही बार होता है। ऐसे कितने लोग हैं जिसको इसको 5 years प्लान बना लिया आप लोगों ने? यस और नो? इट इज नॉट अ 5 year प्लान माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। 5 years प्लान नहीं, 5 days प्लान है, ओनली द 5 days प्लान। ऑन 1st Feb, राइट, give your all mock test with what Scribble Pad only. Do your all rough work on what this only, right? Then 2nd Feb again 2nd, 3rd then 3rd mock test minimum, 4th then 5th minimum 5 mock test with what Scribble Pad and virtual calculator. That is very very important, right? With pencil and with pen, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उस सब का यूज कीजिए, राइट, ओके। तो ये है, हाँ ये तो अभी इसके तो एक क्लास हो गई ना, आशुतोष सर ने एक वर्बल पे एक पूरी क्लास लिया इंग्लिश पर, राइट। गुडाम, तो ये भी गुड मैन, आपको ये से भी पता चल जाएगा, एक वर्ड भी अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका भी, आप देख लीजिएगा क्या है उसका मतलब, राइट। जहां भी आप रफ चीजें कर रहे हैं और जहां पर आप लिख रहे हैं, तो दैट इज द वे। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दैट। तो अगेन आई एम कंक्लूडिंग सिंपली, it is my advice, right? Landscape orientation, try to use what your copy on what landscape orientation. Second thing, try to give the number, right, neat and clean. Third thing, write the numbers in a sequential manner, right? Fourth one, try to solve questions and calculations on Scribble Pad very systematically, right? These are very very important points, okay. MSQ क्वेश्चन ना कैसे हो सकता है? अब देखिए सर, कैन वी प्रोड्यूस द आधार एज ID proof, else we should produce some other. If you have Aadhaar then you can, right? Yes, if you have other means we will inform you about that, okay. Then can we any other question? Any other question on Scribble Pad? Each and everything is clear to you? अब देखो जो जो क्वेश्चंस है मैं आपको कंक्लूड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कर लिया। ये जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, सर पेन ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, आप लेकर चले जाइए, पेंसिल ले जाइए, शार्पनर ले जाइए, इरेजर ले जाइए, राइट, पेन लेकर जाइए, ब्लू लेकर जाइए, ब्लैक लेकर जाइए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पेन लेकर जाइए, उसको सॉल्व कीजिए वहां पर। लेकिन मैंने आपको कहा ना, वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी स्क्रिबल पैड की, तो वो दोबारा जब मांगेंगे तो आपके पहले स्क्रिबल पैड जमा करवा लेंगे, और जबकि आपने उसको रखा हुआ है रिव्यू करने के लिए। जो भी क्वेश्चन पार्शियल आपने सॉल्व किया दोबारा आप उसको बनाएंगे,
इसीलिए उसका एफिशिएंटली यूज कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा मत कर लेना, कोई भी तैश में मत आना। मेरी एक एडवाइस मान के रखिए, उस दिन जब मॉर्निंग में आप उठो तो कोई भी आपको कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको गुस्सा नहीं करना है। अब मैं 1 मिनट आपको एडवाइस दे दूं, वो D-Day है आपका, तो एग्जाम के दिन आपको किसी से भी गुस्सा नहीं करना है, घर में भी नहीं करना है, बाहर में भी नहीं करना है। अगर आपका ऑटो वाला आपसे 100 की बजाय 200 रुपए मांगे तो आप दे दीजिए उस दिन, राइट, उस दिन दे दीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है उसके सबके जवाब मिल जाएंगे कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नेसेसरी है या नहीं है, इट डजंट मैटर, राइट। तो आप पूरे उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे। और थर्ड थिंग, उस दिन के लिए आप अपने आप को आज से कूल करना चालू करो, थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स वॉट मेडिटेशन कीजिए, राइट। और भगवान को बोलिए कि आपके साथ जाए वो। इज इट क्लियर? उनको भी रोज ऐसा नहीं होता, एक दिन गए नारियल चढ़ा दिए 11 रुपए और आप उनसे बोल रहे हैं कि चलिए मेरे साथ, ऐसे नहीं होता। आप रोज 10 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए और उनका पूरा सपोर्ट लीजिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कीजिए कि वो एग्जाम में आपको बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना है। कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका रिवीजन हो गया बहुत बढ़िया है, जितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं बहुत बढ़िया है। कम ज्यादा आ जाए, डोंट वरी अबाउट द मार्क्स इन व्हाट इन कमिंग मॉक टेस्ट। समटाइम्स इट मे बी इजी और समटाइम्स इट मे बी हार्ड। तो 5 डेज में कोई जमीन का आप पूरी चीजों को पलट नहीं सकते हो, राइट। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, राइट। डोंट वरी अबाउट द मार्क्स इन व्हाट मॉक टेस्ट। ये सब हो गया। अब ये जो छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स है ना, उसको बस ध्यान रखिए और वहां पर आपको अपने नाइट में पूरे आपकी नींद पूरी कीजिए। जो 7 to 8 आवर्स है वो आप कंप्लीट कीजिए। अभी भी कई लोगों की नाइट में पढ़ने की हैबिट है, उस हैबिट को चेंज कर लीजिए। आपका फर्स्ट हाफ में पेपर है, सेकेंड हाफ में है, यू हैव आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें एग्जाम हॉल में ज्यादा मायने रखती है। जो आपने पढ़ाई कर ली वो तो हो गई साल भर, ठीक है। तो जो साल भर में आपने किया है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट डे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा और एक स्मार्ट जो बच्चा है ना, वो भी गलतियां कर जाता है और इन गलतियों की वजह से हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यूरिंग एग्जाम्स। इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली सेशन लेकर आ रहे हैं, विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, यूज ऑफ स्क्रिबल पैडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, पहले जाना होगा सर, सेंटर पे कितने टाइम पहले जाना होगा? इट्स अप टू यू सुलाय, बट मिनिमम व्हाट हाफ एन आवर और 1 आवर बिफोर दैट। ओके, आधे घंटा आप पहले जाइए, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। ट्रैफिक हो सकता है, देयर मे बी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। अभी मैंने अपने एक रिलेटिव को एक एग्जाम हॉल में लेकर गया, उस स्ट्रीट में पूरा ट्रैफिक जाम था, वहां से सेंटर पहुंचने में 20 मिनट्स लग गए, 20 मिनट्स। और वहां से 10 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया, एग्जाम से बाहर कर दिया गया, उनको एग्जाम हॉल में एंटर करने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक सिचुएशन। अंदर दे विल फॉलो देयर ओन रूल, ओके, वो पूरा अपना रूल फॉलो करेंगे, आपको एंटर करने ही नहीं देंगे। कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप उस सेंटर पर पहुंच नहीं पाओगे, आपके पास कुछ आ गया तो जो भी है, मिनिमम आधे घंटा आपको पहले जाना है। उस दिन आप कैजुअल मत लीजिए, वो अपना इंजीनियरिंग का एटीट्यूड ना घर में छोड़कर जाना कि उठे और चल दिए, मतलब, ठीक है। तो वो रहना चाहिए एटीट्यूड, पेपर बनाते हुए दिखाना ना कि एग्जाम में लेट पहुंच के कुछ नहीं कर पाओगे आप। ओके, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उस दिन, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर से सेंटर हॉल पर कोई भी गुस्सा मत दिखाइए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा, राइट। numerical like this, how many statement are correct? Okay, just in MSQ, what can MSQ be numerical type? It may be numerical type or it may be theoretical type. Okay, it may be numerical or it may be theoretical. What is good score for mock test? यार ये अब क्वेश्चन, that is not the relevant question. If you are going to if you are getting the 70 marks, 70 plus marks in mock test, right, more than enough. Okay, in some test we can get 80 marks, in some tests we are not able to get 50 plus marks. It depends upon the level of mock test. Okay, अब मेरा मनदीप बढ़िया हाल है, आप कैसे हैं? When the most important concept session for or most important topic session just after this session. Okay, so please subscribe the channel, like the session so that you will get the notification. ये देखिए too much, ये देखिए, और ये आपको प्रिकॉशन रखना है। तो होप सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन नाउ। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट स्क्रिबल पैड। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप, ESE and GATE, a complete solution to all your GATE problems.
This is a BYJU'S exam prep. Download this from Google Play Store now. Then, thank you very much. Good luck for coming exams. Thank you very much. ये तो बनती है। अब हमारे साथ 1 मिनट के लिए चंदन सर भी जुड़ चुके हैं। हाउ आर यू चंदन सर? तो एक वार्म वेलकम की तो बात बनती है। चंदन सर एक शानदार सेशन आप लोगों के लिए अभी मैंने जैसा कहा लेकर आने वाले हैं, उसको मिस मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स फॉर व्हाट गेट 2022। ओके, तो दैट इज okay. How can we solve the MSQ? Already I have taken what session on that MSQ. Please watch that, you will get the answer for that. Okay everyone, and again thank you. Please like the session, subscribe the channel.